Thank you very much, sir. I'm sharing my screen. So my screen is visible. Thank you very much. Good evening, everyone. Before starting this session, I would like to express my gratitude to Professor Bedkar sir for arranging this 1000 webinar series and giving me opportunity to present the lecture also. I extend my sincere thanks to our principal, Dr. Mazhar Ahmed Farooq sir, for showing the interest in us, and they have selected us. So thank you everyone, Bedkar sir and my principal. So first of all, we'll start my topic. Today's topic is why knowing the blood group is important. So everyone know that is blood. It is an essential life force, constantly flowing and keeping our body working. Blood is mostly fluid but contains cells and proteins that literally make it thicker and than the water. So it has four parts basically: red blood cells, white blood cells, platelets, plasma, and each part has specific and important tasks to carrying the oxygen, to carry out waste product, and our blood also act like a kind of a health barometer. So in scientific language, we can say it's a connective, a fluid connective tissue, and it's essential for our life also. Uh, and it circulates throughout our body and delivers essential substances like oxygen, nutrients, and transporting gas like oxygen and CO2. It has many functions. I have listed out very few. And it also transports the waste products, and it helps to remove toxins from our body. It also transports the nutrients. Apart from this, it regulates our body temperature. And this, generous blood donors are the only source of the blood. Because why I wrote here, because it the blood, it cannot be, it has no substitute for the blood. There is no substitute for blood, and it cannot be made or manufactured. So only the generous blood donors are the only source of blood for patients in need of a blood transfusion. If you see the, I wrote some measurements like 6 to 8% of our total body weight. This is the makeup of our blood. And adult human has approx 65 to 70 ml of blood per kg of body weight. So therefore, a human have around 5 liter of a blood in their bodies. The volume may vary according to male and the female. 5.5 in case of male and 4.5 liter in case of female. So let's see the composition. So there are four basic components of our blood, human blood. So plasma, red blood cells, white blood cells, and the platelets. After centrifugation of a blood, you can see the different, the layers. First layer will be of plasma. Second layer, which is whitish in color. You can see a whitish layer in my image, left image. You can see, and the blood cells, white blood cells, and the platelets. And the lower part, that is the dark reddish color, it is the RBC or the red blood cells. So on the right side, I have shown the how they are, means what is the percentage. If you see the plasma, in the plasma itself, you can see the water is there, ions, proteins, nutrients, waste, and even the gases are there. Let's see the next slide. First part I have chosen here, the plasma. It is made up of suspended liquid, and it makes 55% of the blood. And plasma made of 90% of water and 10% of protein, lipids, carbohydrate, amino acids, antibodies, hormones, electrolytes, wastes, and the salts and ions. So
Remaining 45% are the other component, we can say. RBC make up 99% of blood cells. So white blood cells and platelets make up only the 1%. Here is the images of the RBC. You can see this is the other name for RBC is erythrocytes. On the right side, you can see the white blood cells. These are also called as the leukocytes. And the lower one, this is the platelets, or we can say thrombocytes. You can see this is the types RBC, white blood cells, and the platelets. Images are also given there. So along with that, we have functions also. So RBC, they help in O2 and CO2 exchange. White blood cells or leukocytes, they are the they fight against the infections. We can say they are the soldiers of our body. And platelets, they helps in blood coagulation or blood clotting. Here is a detailed uh, tree concept map, we can say. So blood, it is divided into plasma and the blood cells. 55% of plasma, whereas 45% of blood cells. Again, if you see the percentage of plasma, so 92% is water and dissolved substances are 8%. And in that dissolved substances, you will see there are salts, 3.5%, food that is, glucose, amino acids, fats, etc. That is organic compounds. Hormones are there, then proteins. Again, we have two types of protein in that. Fibrinogen for clotting, it plays a very vital role in fibrinogen. And other factor or other component is albumin, which maintains the osmotic pressure of the blood. The last one from here, you can see the waste product. So many carbon dioxide and urea are the waste product of our body. So if you see the blood cells, RBC, WBC, and platelets. So red blood cells, they help in transport of oxygen. White cells, they are the very vital. They play a vital role in defense mechanism, and platelets for clotting. So how this white cells or the white blood cells play a vital role, we'll see in detail later. So lymphocyte, you can see, just see this, these are the outline. So lymphocyte, if in further slides or the next slide, if you uh, see some words are coming, so that's why I put this chart. So phagocytes are there, then the lymphocytes are also there, and these lymphocytes are further divided in the B cells and the T cells. So B cells, they produce the antibodies, and T cells, they kill the infected and the cancerous cells. This one is important. Now let's see in detail. Red blood cells or erythrocytes, RBCs or the red blood cells, which are also called as a erythrocytes. So they are abundant in our body or blood. So 4 million to 6 million per microliter of blood. They are biconcave or disc shaped. And the color of blood, it is because of hemoglobin. A component or the pigment is present in our blood. It is known as a hemoglobin. So it helps in the RBC to deliver the oxygen. Other cells need to produce energy. So RBC, they are circular, disc shaped, and biconcave. They present hemoglobin in the RBCs, give the cells their characteristic red color. Dark red color represent the HB percentage. Also, we can say the mature RBC lacks a nucleus. This is also an important point. They lack nucleus and they do not contain any genetic material. So erythrocytes in humans are produced in the bone marrow, and the average lifespan of a RBC of a healthy individual is 120 days. And ones of these RBCs are destroyed in the liver and the spleen. White blood cells or leukocytes, they are responsible for or we can say the protecting our body from infections. Your white blood cells account for only about 1%.
of your blood, we can say. But their impact is a big one. They protect you against illness and diseases. Think of white blood cells as your immunity cells, we can say. In a sense, they are always at war. They flow through your bloodstream to fight viruses, bacteria, and other foreign invaders that threaten your health. When your body is in a distress, a particular area is under attack. While white blood cells rush into that place and destroy the harmful substance and prevent illness. So where they are made in a bone marrow, and they are stored in your blood and lymph tissues. So because some white blood cells are called as neutrophils, have a short life, less than 1 day. So your bone marrow is always making them. Lowest number in the blood is 4,000 to 10,000 in micro, and normal range is 4 to 10,000 microliter. Platelets, they are also called as thrombocytes. They are small, colorless fragments in our blood. Platelet helps your blood to form a clot, we can say, or they stop bleeding. If one of your blood vessel gets damaged, it sends out the signals to the platelets. The platelets then rush to the site of damage and form a plug or a clot. We can say it's a fibrin also. Okay, to fix that damage. So they made in our bone marrow, a sponge-like tissue inside our body bones. So they seal the wound and prevent blood loss. A normal range is also given there. So with the help of this, blood, we have many tests to find out the diseases. Why we are doing this blood test every time. You might have seen that mostly many of the doctors advise you to do the test. Why so? Because there are n numbers of diseases, and by the different types of tests, doctor may analyze the root cause of a disease, we can say. So I have listed out some tests, but with the help of this test, you know one can understand, or the doctor can understand. So first one is CBC. Second one, we can see the blood chemistry panel. Lipid panel is also there. Coagulation tests are there. Then blood typing is also there. HIV test and thyroid function test is also there. So whenever necessary, which type of a disease or which type of a condition of a patient is there, so doctor used to advise you that test. Okay. So another list is here. You can see the cholesterol and the lipid profile. Nowadays, most of the people, even a common man, we can say, the person who does not know about more science, but still he used to say cholesterol check karwana hai and lipid test karwana hai. So this is a very common test for everyone. C-reactive protein test or blood test. Now, C-reactive in Corona period, COVID-19, when it was there. So the CRP test was in form. D-dimer test is also there to checking the blood clotting problems, to monitor different condition of a patient. Then next is erythrocyte sedimentation rate, that is ESR test, to check the inflammation where RBC clump together. Then folate test. It is an important nutrient for making a normal red blood cells, to check whether you have enough folate in your blood or not. Then full blood test is all count. Then HbA1c test, HCG test, internal normalized ratio INR test, iron studies blood test, kidney function test is again important one. We can say KFT is, in other language we can say in short forms KFT, to see the kidney function test. Okay. Then the liver function test is also very much familiar for us. Then magnesium blood test, blood glucose test, calcium blood test, estrogen test, hormonal, even percentage of hormones, how much, the levels of hormones are there, are also known by the blood. So prostate specific antigen test, testosterone, thyroid function, troponin, vitamin B12, and the vitamin D test. Blood gas analysis, allergy test, infectious diseases test, genetics test, inflammatory markers, or specialized test. Now we'll move towards our main topic, that is the blood group. So
basically blood groups. There's, or we can say blood types, refers to the classification of a blood based on the presence or absence of certain antigens on their surface of RBCs. I have shown you the RBC diagram. On the surface of this RBC, that antigens are present. So the most commonly known blood groups system, which is very much practiced, it is ABO blood group system. It is given by the Carl Landsteiner, which is categorized this blood group into these four main types: A, B, AB, and the O. So one fact I wrote here, that the blood group it is determined by your parent. Whatever the blood group of your parent will be, the offspring will be the like that only. So this is a hereditary. Okay. So this is a kit. With the help of this kit, one can check which type of a blood group is there. So antiserum A, antiserum B, and the D. On the slide, we used to put a drop of these three drops, anti A, B, and anti D. One drop. Then one drop of your blood is placed on that slide, and after that we have to just observe carefully about in which of this drop the clumping occur. So I have put here the chart for every type of a blood group. So you can see here the sample is mixed with the blood type A and B, type B. So antibodies and the monitored to see whether the red blood cells in the blood clump together or not. If there are clot, this means that the blood has reacted with one of the antibodies. Second, this is called as a reverse typing. Here, the blood plasma without cells is mixed with the type A or B. So people with type A blood have B antibodies, and people with type B blood have type A antibodies. So people with type O blood have both type A and B antibodies. So to establish whether the blood is Rh positive or negative, we look at whether or not the blood has protein on the cell surface. If there are protein on the cell surface, it would be the Rh positive, and if not, it would be the Rh negative. So chart is also given here. And on the right side, you can see I have shown that a table is given. So in that you can see this is the list of blood groups, and on the next column you can see the A positive blood group can donate to the A positive and AB positive blood person, and this A positive can receive from A positive, A O positive, and O negative also. So it can receive and the donate. So the chart is given here. So this universal red cell donor has O negative blood, and universal plasma donor has the AB blood. I have listed, shown here, one chart here. You can see the Samayak Lalit in 2021. He has shown the very famous or the common blood group in India. Here is the average blood group type distribution in the Indian population, we can say. So O positive person, it is 32.53% in the India. O negative is 2.03%. A positive is 21.8%. A negative is 1.36, and B positive it's a 32.09%. B negative is 2.01, and A positive is 7.70, whereas AB negative it is 0.48%. So the rarest one we can say it is AB negative. So RH system, if you see, like the ABO system, the RH system, you can say rhesus, also called as a D antigen, is based on the presence and absence of a certain antigens on the RBC cell, we can say cell membrane surface. So if the antigen is present, so it will be Rh positive. If antigen is absent, it will be Rh negative.
Now let's move towards the RH incompatibility in pregnancy, especially. What happens when this RH positive and negative persons, what happened? Let's see. It's extremely important to take the mother's RH factor into account during pregnancy. So, RH positive is the most common blood group, and RH negative is less common. And in certain precautions must be taken with the RH negative woman when pregnant. If their partner is RH positive, there is possibility that the baby will be also RH positive, which may lead to complication during pregnancy. So this will be occur due to blood of mother and the child will come in contact. So in short, I wrote here. You can see uh, every blood group. It has two types of genotype. We can say. So if a person with the blood group AB has one A gene and one B gene, while a person with blood group A may have two AA genes or an one A gene and one O genes. But since it is dominant, A prevails. So, in this diagram, actually, this is not the uh, understand easily because, this is given by the Mendel's, one famous researcher, we can say. So he has given some checkerboard like Punnett checkerboard. So by this we can show the probable rates of fetus or infants. So this is the display of parent-child group compatibility table. So if the blood group of a parent means male father and mother will be AA. So the possible blood group of baby will be AO and completely impossible is B and AB. Next chart I will take. It is more better. So you can see this is the father's blood group and this is the mother's blood group. So if a mother is A positive and father is again A positive, so it will be A or O. If father is A and mother is B, so the chances are many because A, it could be means their children could be A, B, AB or O. If father is A and the mother is AB group, so it will be A, B or AB. That the infants or the babies will be A, B or AB. If the mother is O and father is A, so it will be either A or O. Likewise, this is like checkerboard only. So and these are all this in white color. These are the child blood type. So if mother is A and father is B, so again A, B or AB or O. Blood group, child's blood group will be A, B, AB or O. If mother is B, then and father is B, so B or O. If mother is AB and the father is B, so A, B or AB. If mother is O and father is B, so it will be either B or O. Likewise, AB or OB, O. You can see the if mother is O and the father is AB, so the child's blood type will be A, AB or AB. If you see the father and mother, both are O, so their children will be or all children will be O. Okay. Now let's move towards the diseases or disorders. As I said, one must know the which type of a blood group of a uh, mother and the father before pregnancy or after pregnancy also. The gynecologist used to check these things. So this is we can say this is a commonest. Let's say 1 month. ओके ओके चलेगा सर अगर हम बताएं जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि मदर और फादर का ब्लड ग्रुप जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अगर इस टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं यहाँ तक तो समझ आ गया आपको कि आप लोगों के जो ब्लड ग्रुप्स हैं
मदर या फादर के, और उनके जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स है बच्चों के, तो यहाँ मैंने चार्ट में दे दिया। जैसे ए के सामने आप देख सकते हैं AO, BA के सामने ये दे दिया मैंने। इसी टाइप से, यानी कि यहाँ तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के कोई भी ब्लड ग्रुप हो। बट थिंग इज दैट परेशानी कब होती है, जब मदर का ब्लड ग्रुप जो बताया मैंने था कि इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जहां पर ब्लड ग्रुप में जो प्रॉब्लम आने वाली है, दैट इज सब RH फैक्टर, जो डी जो एंटीसेरम जो चेक किया था हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में, उसकी वजह से ये वहां पर एक डिसीज वी कैन से हीमोलाइटिक डिसीज फॉर्म होती है, इसको हम बोल सकते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फिटालिस नाम इसीलिए से आप शायद आपको अंदाजा आ रहा होगा कि फिटालिस यानी कि उस इन्फेंट या उस बच्चे को डिसीज होगी ब्लड की, ठीक है, न्यूबॉर्न को, जो कि बेबी बॉर्न होने वाला है, उसको ये डिसीज हो जाएगी। और अगर डिसीज ना हुई कुछ और, जैसे उन्होंने डॉक्टर ने प्रिकॉशंस भी ले लिए, या प्रिकॉशंस अगर नहीं लेता है तो एनीमिक हो जाएगा वो, या उसको जॉइंटिस भी हो सकती है। सो यू कैन सी हियर कि अगर आपको क्लियर बता दें हम कि मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, ठीक है, मदर अगर नेगेटिव है एंड फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इस कंडीशन में होगा क्या कि प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल क्यों रहेगी, बिकॉज अगर उनका बेबी पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, AB या फिर O, कोई भी हो जाए, बट अगर वो पॉजिटिव है, बता रहे हैं अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या कि उनका जो वो जो एंटीबॉडीज है वो, यानी कि देखिए एंटीबॉडीज एंटीजन में भी अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो वी कैन से कि वो जो बचा हुआ ब्लड रहेगा, ठीक है, जो बचा हुआ थोड़ा सा ब्लड, वी कैन से अ स्मॉल ब्लड, या फिर उसके जो कुछ कण बोल सकते हैं, अगर हमारे वो मदर के बॉडी में रह जाए, ठीक है, और वहां क्या करेंगे, ये जो कण जो रह चुके थे डिलीवरी के बाद, उस वक्त क्या होगा कि उसमें के जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, और मम्मा उनकी कौन सी है, मदर कौन सी है, नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव बेबी था उसमें के जो कुछ पॉजिटिव जो फैक्टर्स थे वो उनकी जो बॉडी में रह गए हैं मदर के। नेक्स्ट डिलीवरी के वक्त क्या होगा, जब वो दोबारा कंसीव करती है, वो वही लेडी, नेगेटिव वाली लेडी अगर दोबारा कंसीव करती है, और तब भी वो फीटस यानी कि वो जो बेबी था उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जब दूसरी बार उसका ब्लड मिक्स होगा प्रीवियस वाले RH पॉजिटिव के साथ, जो कि मदर के ब्लड में था, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर कि वो जो फीटस है इसको हार्म पहुंचेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ, मतलब हमने जो परसेंटेज देखा है स्टडीज में से ही पढ़ा है कि यहाँ पे ये परसेंट होता है 0.001%, ठीक है, कि तो डॉक्टर्स प्रिकॉशंस लेते हैं। पहले जैसे जमाना नहीं रहा कि घर में ही डिलीवरी हो जाए, यहाँ पर हम लोगों के पास मतलब गरीब से गरीब घर में भी पुअर फैमिली भी रही, तो वो कम से कम हेल्थ सेंटर्स है हम लोगों के पास, तो वहां पर जाकर दिखाते हैं, वहां पे ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं, और वहां पे ये सारी चेकिंग्स होती है, ठीक है, कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, बेबी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, और फिर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए डॉक्टर्स के पास इलाज है, वो जो है तो शॉट्स देते हैं, मींस शॉट्स इन द सेंस छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं, वो अप्लाई करने के बाद पॉसिबिलिटीज है कि वो बच जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो बताया मैंने 0.001% या 0.01% में ये होता है कि वो जो सेकंड बेबी है उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट बेबी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन सेकंड जो चाइल्ड है उसकी डेथ के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि देखिए कि फर्स्ट प्रेगनेंसीज में एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन लोअर कंसंट्रेशन एंड डज नॉट हार्म द fetus, ठीक है, बट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH फैक्टर विल प्रोड्यूस द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है वो चाइल्ड, तो द ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी विद द RH पॉजिटिव बेबी, concentration of antibodies against the RH factor will build up, which will attack the blood cells of fetus, that is the baby. This could be fatal for the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby, and even it will cause the death of that fetus. So this is very important कि blood group आपने जांच करवानी चाहिए। स्पेशली हम जब बोलेंगे कि मैरिज के पहले भी करो बाद में भी कराओ, वैसे तो इट्स एन गुड प्रैक्टिस कि हमारे पास अवेयरनेस है, लेकिन जहाँ पे मतलब जो गांव वगैरह है, छोटे मोटे जो गांव एरिया है, वहां पर ये सब चीजें अभी भी कॉमन नहीं है।
शहर में बोल सकते हैं हम, विलेज तक भी अभी कुछ कुछ विलेजेस में आ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि खेड़ा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे छोटे मोटे है, तो वहां पर ये प्रैक्टिस नहीं है। तो वहां पर भी ये चीज होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप जानना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है किस तरह से मैंने दिया है, देखिए क्या पॉसिबिलिटीज है। ये तो मैरिजेस के वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास भी ऐसी चेकिंग तो होती नहीं है कि ब्लड, हम लोग जनरली रिश्ता जब करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग बायोडाटा में क्या क्या लिखते हैं, उसको घर है या नहीं है, देन उसकी सैलरी कैसी है, उसके बाद उसकी मदर क्या करती है, फादर क्या करते हैं, देन इवन उनके जो सिस्टर्स, फादर्स, अंकल्स, एवरीथिंग उस जो है तो बायोडाटा के ऊपर लिखा होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस हमारे पास नहीं है कि वो किस टाइप का ब्लड ग्रुप बिलोंग करता है, वो लड़का या लड़की, ठीक है। साथ ही वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी मेंशन नहीं किया जाता। तो दिस इज इट शुड बी, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस कि हमने करना चाहिए, जबकि ये चीज लोग ऐसे समझते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एजुकेटेड जो फैमिलीज हैं वो करवाते हैं। ऑन द राइट साइड यू कैन सी कि हमने एक टेबल बताया है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। मदर और फादर, ये देख सकते हैं आपके डी डिनोट कर रहा है। सर इज इट पॉसिबल नाउ, विजिबल नाउ? हाँ, आर एच पुनेट स्क्वायर। Okay, thank you very much. So on the you can see this white table RH Punnett squares. यहाँ आप देख सकते हैं कि D डिनोट कर रहा है प्लस साइन, दैट इज पॉजिटिव, RH फैक्टर पॉजिटिव, एंड स्मॉल d। क्यों तो यहाँ ये D कैपिटल और स्मॉल क्यों लिया है, इसके पीछे भी हम बता दें आपको राज, कि ये D जो लेटर है दिस विल बी डोमिनेंट्स के लिए, नॉट ओनली दिस D, यहाँ पर D लिया है। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं हम लोग उसको डोमिनेंस मानते हैं, जैसे डोमिनेंट यानी कि जो एक्सप्रेस होते हैं, ज्यादातर एक्सप्रेस होते हैं, और स्मॉल डी जहां लिया मैंने तो वो रेसिसिव कैरेक्टर्स होते हैं, और कैपिटल डी जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं। और जो स्मॉल लेटर्स लिखते हैं हम यहाँ पर, तो वो सब चीजें क्या होती है, रेसिसिव कैरेक्टर्स होते हैं। रेसिसिव का मतलब ये कि अगर वो फर्स्ट जनरेशन में अगर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं। अगर सेकेंड में भी ना अगर एक्सप्रेस हो पाए वो कैरेक्टर्स या जीन्स, तो वो थर्ड जनरेशन में आके एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अगेन एक दिया है, ऊपर जो रो है वो फादर है, और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप मदर है। सो ये जीन्स दिए हमने पहले, इसमें ये होमोजाइगस जीन्स है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ये है आपके रेसेसिव अगर रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी यानी कि उनके पूरे के पूरे चार जो चिल्ड्रंस रहेंगे, कैसे रहेंगे, सबके सब RH पॉजिटिव चिल्ड्रंस रहेंगे। अगर रेसेसिव मदर के यानी कि नेगेटिव अगर मदर होती है, और नेगेटिव रहना मतलब रेसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली ऑन द राइट साइड पॉसिबिलिटी, यहाँ अलग पॉसिबिलिटी बताई गई है बिकॉज ऑफ जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप ये दो टाइप के दो यू कैन से बोल सकते हैं हम वर्ड्स है, साइंटिफिक वर्ड्स है जो कि यूज किए जाते हैं जेनेटिक स्टडीज में। फिनोटाइप इस चीज को बोलेंगे जिसमें जो है तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या जो अपीयरेंस वाले जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि बाल है, आंखें हैं, या फिर फूल का जो कलर है, या फिर शेप है, ठीक है, शेप साइज वगैरह। तो ये हो गए पूरे फिजिकल कैरेक्टर्स, तो उन लोगों को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। सिमिलरली जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको बोला जाएगा, जिसको हम जो जनरली जो होते हैं, दो टाइप के हमारे जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक क्रोमोसोम पे हम जो कैरेक्टर्स चूज करते हैं, तो वो हम लिख के डिनोट किससे करते हैं, दो टाइप्स की, जैसे कि यहाँ लिया हुआ है हमने कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ठीक है। तो अगर रेसेसिव मदर है, और यहाँ पर अगेन होमोजाइगस लिया हुआ है, पॉसिबिलिटी चार हो सकती है, मैंने यहाँ पर आपको दो ही दिखाया है। क्यों तो यहाँ दोनों केस में मदर होमोजाइगस है, नेगेटिव है होमोजाइगस, ठीक है। यहाँ पर फादर पहले केस में होमोजाइगस है, पॉजिटिव, यहाँ पे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। होमोजाइगस का मतलब क्या, बोथ आर कैपिटल डी, ठीक है। सो होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होगा, अगर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस अगर फादर रहे और होमोजाइगस मदर रही, तो यहाँ क्या होगा कि 50-50% चांस रहेंगे
आधे उनके चिल्ड्रन जो रहेंगे 50% चिल्ड्रन उनके RH पॉजिटिव रहेंगे और 50% चिल्ड्रन उनके RH नेगेटिव रहेंगे. ठीक है, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड्स. अदर डिसऑर्डर्स जो कि हो सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिस्ट आउट किए हैं. hemoglobinopathies, so it will affect the structure or the production of hemoglobin, which can lead to various blood conditions. यहाँ मैंने एग्जांपल दी है सिकल सेल डिसीज और थैलेसीमिया. Coagulation disorder, this condition is affecting the blood clotting, which can lead the bleeding disorders. ये डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे पास जो होता है, जैसे मैंने बताया कि चेक नहीं करवाते हैं, और ऐसे टेस्ट जो कि मतलब बहुत ज्यादा डीप टेस्ट जो रहेंगे, तो उनकी कीमत ज्यादा है, फीस चार्जेस ज्यादा है, उसकी वजह से जो है तो बहुत सारे लोग उससे महरूम रह जाते हैं, यानी कि वो करवा नहीं पाते. तो हीमोफीलिया, ये कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स में एक हीमोफीलिया नाम की एक डिसीज है. अगेन इट्स अ जेनेटिक डिसीज. तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफिशियंसी और डिसफंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होता नहीं है, और ये डिसीज अगेन इट जो कॉज करता है, वी कैन से द कैरियर इसकी फीमेल ही होती, मेल नहीं होते, मेल अफेक्टेड और विक्टिम्स होते हैं. नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इसमें इट विल अफेक्ट डेफिनेटली इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट टू दैट वी हैव ल्यूकेमिया और लिम्फोमा. It can cause a cancer affecting blood forming tissues such as the bone marrow and lymph nodes. Yeah. So we are now at the conclusion. So this blood group, they play a very critical role in healthcare or medicines. They are also essential for diagnosis, treatment, and understanding the disease risk. It ensures the safe and effective treatments, surgeries, transfusions, as well as reduce the risk और एडवर्स रिएक्शन. सो ब्लड ग्रुप चेक करवाना बहुत ज्यादा क्यों जरूरी है यहाँ पर, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए. कितना डेंजर या डिसीज का रिस्क कितना डेंजर है, वी कैन से. इवन अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हमको जो है तो अच्छे से जांच करवानी चाहिए सारी. ठीक है, इवन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक दूसरे को जो हम ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी आपको आपका ब्लड ग्रुप जानना जरूरी है कि आपको किस टाइप का ब्लड ग्रुप है. सीवियर इंजरीज हो जाती है. नाउ एंड देन आप सुन रहे होंगे आसपास भी कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अगर आपका ब्लड ग्रुप का अगर आपके आईडी कार्ड्स वगैरह आपके कार में या फिर गाड़ी में या फिर आपके पॉकेट में अगर रहता है, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप है. क्यों, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप रहा तो उस वक्त उसका इंतजाम करवाना वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए आपका ब्लड ग्रुप जानना बहुत जरूरी है. एज आई सेड कि प्रेगनेंसी के वक्त भी आपका ब्लड ग्रुप चेक करवाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इमरजेंसी सिचुएशंस भी आती है. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड के यू शुड डोनेट ब्लड एंड सेव मैनी लाइफ. व्हाई वी शुड डोनेट ब्लड, हमारा इसमें फायदा क्या है? आई हैव लिस्टेड आउट के कुछ फैक्टर्स है. चलिए, ब्लड डोनेट करके आप किसी की लाइफ बचा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग, स्पेशली आप और हम नहीं, लेकिन मैनी पर्सन्स, सभी जो कॉमन जो पर्सन्स है, जो लोग हैं, वो डोनेट करना नहीं चाहते. उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ब्लड डोनेट कर दे तो उनका खून कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने यहाँ पर कुछ जो है तो बेनिफिट्स लिखे हैं कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके क्या फायदे होंगे. तो यहाँ पे देखिए कि आपकी जो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो है तो देखिए खून गाढ़ा हो जाता है, आपने सुना होगा. तो अच्छी चीज है कि आप ब्लड डोनेट करते रहें. उसके बाद आप जो है तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आपके कम हो सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं उसको. आपको जो है तो कैंसर डेवलप नहीं होगा फ्यूचर में. देन आप उसके जो ब्लड की जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से होगा. आपको पता है, जैसे मैंने लिखा कि 120 दिन लगते हैं आरबीसी को बनने में, उसके बाद वो है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर दोबारा बनते हैं, ऐसा होते रहता है. लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट करते रहे तो आपका खून ताजा के ताजा रहता रहेगा. वेट लॉस करने के लिए भी अब ब्लड डोनेशन अच्छी चीज है. देन हेल्दी लीवर भी रहता है अगर आप ब्लड डोनेट करें. एंड द मेन थिंग दैट इज इट कैन इम्प्रूव योर मेंटल स्टेट. सो इट इज अ गुड थिंग कि आप ब्लड डोनेट करें. एंड इन दिस सेशन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नाउ एंड देन जहां पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे, आप अपना ब्लड डोनेट करें. और इसको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लड डोनेशन से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्लड बनता रहता है. आप अच्छे से डाइट लीजिए अपनी, और सेफ एंड हेल्दी लाइफ जिए.
यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिखा मैंने कि ब्लड डोनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों तो यहाँ पर जो तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक पब्लिश हुआ था न्यूज के अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी इंडिया नीड्स 14.6 million units of blood which remains unmet. It leads to huge supply gap and 100% voluntary donation can enhance the blood safety in the India, but currently only 70% of blood donated is on the voluntary basis only and 30% is still remaining. So as I said कि blood का replacement नहीं है, आप और हमको मिलकर ही blood donate करना होगा. So let's डोनेट इंशाल्लाह इन फ्यूचर. अगर आप अभी इस कंडीशन में नहीं है कि देख सकते दे ब्लड, लेकिन फ्यूचर में आप कोशिश कीजिए जब भी आप हेल्दी फील करें आप ब्लड डोनेट कीजिए. वंस इन अ ईयर और 2 years में या 5 years में आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं. दैट इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच सर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट. थैंक यू वेरी मच. जी सर. यस यस सर. यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू हैव एनी क्यूरीज. हेलो, नमस्ते मैडम. जी मैडम, नमस्ते जो सर. आपने ब्लड के 4 जैसे हमारी कैटेगरी है ए बी और ओ, इनमें सबसे सुपर कौन सा माना जाता है? और दूसरा ओ सवाल ओ पॉजिटिव सबसे अच्छा माना जाता है. मतलब खून जिसका जो सबसे अच्छा माना जाता है वो ओ पॉजिटिव है. जो रेयरेस्ट रेयर है ओ नेगेटिव है. ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो रेयर है, इवन ए बी नेगेटिव इज आल्सो रेयर. और दूसरा पूछना सवाल मैडम कि जो जैसे ओ पॉजिटिव है, मेरा ओ ही पॉजिटिव है, तो मच्छर मुझे कम काटते हैं, क्या ये बाकी लोगों को कुछ ऐसा मेरा ही सोचना गलत है या ऐसा होता है? नहीं सर, वो मच्छर वाला फैक्टर दैट इज डिफरेंट वन. क्यों मच्छर में भी अगेन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉस्किटो. अगर आपने शायद कहीं पढ़ा होगा कि तो हर जगह पे ये फैक्ट्स आ रहे हैं कि फीमेल जो मॉस्किटो है, जैसे हमारे आपने मलेरिया का पैरासाइट देखा होगा कि फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती है ब्लड की, तो वो ब्लड पैरासाइट है. ठीक है, सॉरी नॉट पैरासाइट, ब्लड पर सरवाइव करती है ओनली फीमेल. ठीक है, ह्यूमन ब्लड पे. एंड अगर हम मेल का देखें तो वो फ्रूट या फिर जो झाड़ का जो रस होता है, फूल के रस होते हैं, वो उसके ऊपर बैठते हैं. कई ऐसे मॉस्किटोज हैं जो कि आपको बाइट करते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं होगा. सभी में पैरासाइट्स नहीं होते. तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी ओडर ऑल्सो कि आपके मतलब कई बार देखा होगा कि आपके पैरों के पास ही मॉस्किटो आती और सभी के पैर के पास नहीं आएंगे, आप ही के पैर के पास आएंगे, ऐसा भी होता है. तो
odor, कई स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि odor play a very any other question? धन्यवाद मैडम। मैडम आपने जो जानकारी दी बहुत ही अच्छी जानकारी है और ये होनी भी बहुत आवश्यक हो गई आज के इस भाग दौड़ के जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। हेलो। यस सर। हाँ मैडम, पिताजी का AB+ और माताजी का B+, तो बच्चा कौन सा ग्रुप का बनता? ओके ओके सर, मैं स्लाइड पे बता दूं मैं आपको, 1 मोमेंट। सर माय स्लाइड इज विजिबल? ओके 1 मिनट। सर मैं उनको कंफर्म, मतलब उनको अगर मैं दिखा दूं तो ज्यादा कंफर्मेशन अच्छा होगा ना। Is it visible, sir? हेलो। Yes. Is it visible now? Now? Is it visible, sir? ओके सर जी, देखिए ये है। अगर देखिए सर, आपने क्या क्वेश्चन किया है? B+ और माताजी का B+, तो बच्चा कौन से ग्रुप का बनता है? AB+ मदर है। नहीं नहीं नहीं, पिताजी AB+, ओके, और माताजी B+। B+, ओके, तो उनके जो एक्सपेक्टेड रहेंगे चिल्ड्रंस, तो A हो सकता है, B हो सकता है और AB भी हो सकते हैं, लेकिन O नहीं होगा। वो नहीं होगा। ओके जी, A, B और AB। ठीक है। हाँ। Any other question, please? Okay. थैंक यू वेरी मच सर। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर जी। मैं ऐसे सवाल पूछना नहीं चाहता, जब हमारे दोस्त बेटकर साहब ने थोड़ा इंसिस्ट किया है, मोटिवेट किया है, इसलिए थोड़ा फनी क्वेश्चन है ये। अभी आपसे चर्चा हुई थी कि मच्छर काटता है, अभी किसने कहा था? हाँ। एक साथी ने, और आपने उसका जवाब दिया था वो ऑर्डर पर डिपेंड है। हाँ सर जी, एक्चुअली जो बॉडी ऑर्डर। हाँ हाँ, तो मैंने मेरा ये कहना है कि सिंपल लैंग्वेज में वो म्हणजे मॉस्किटोज आर बीइंग अट्रैक्टेड ड्यू टू आवर बॉडी ऑर्डर। तो ये मतलब है अभी कुछ मतलब यंग जनरेशन में परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। सो फिर वो परफ्यूम इस्तेमाल करने वाले को वो मच्छर नहीं काटेगा क्या? नहीं सर, उस टाइप का नहीं सर, एग्जैक्टली वैसे नहीं सर। आप बैठे हैं तो आप देखिए ना, पैरों के अतराफ भी रहते हैं आप, जैसे जिसका आपको ये अंदाजा होगा कि कई लोगों के शूज का जो रहता है वो स्वेटिंग एंड ऑल, तो उसमें भी कई ज्यादा सब बैठे हैं मीटिंग हॉल में, किसी को नहीं है कि एक ही बंदे को काट रहे हैं ऐसा। My question was it was I said in the beginning it is funny questions कि body odor को तो mosquitoes attract करते हैं, तो when the young peoples वो थोड़ा सा परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं, so it's a strong odor। तो ऐसे strong odor में whether मच्छर अट्रैक्ट नहीं होते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि mosquitoes can smell only the body odor, natural body odor, है ना? Yes. और ये तो मच्छर भी ऐसा नहीं करता होगा किसको काटना है किसको नहीं काटना है,
कौन से ब्लड ग्रुप को काटना है, कौन सा नहीं काटना है, किस पर नहीं बैठाएंगे। हाँ, वो तो है। पर बाकी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था मैडम। इट हैज रिमाइंड मी माय प्रीवियस इयर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो बड़ा खुशी हुई है आप सुनकर। Very much, sir. As I said to बेडकर सर ऑल्सो के प्रिपरेशन के वक्त ना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लास्ट वीक बनाई थी मैंने स्लाइड, लेकिन कुछ छुट्टियों में ऐसा हो गया थोड़ा। हाँ। हम्म। सर इस पर भी रिसर्च हुआ है सर कि किस टाइप के ब्लड ग्रुप को मच्छर ज्यादा काटते हैं और किसको नहीं। लेकिन अगेन कि उन्होंने स्टडी करने वालों का कैसा रहता सर कि उन्होंने मतलब वहां पर कुछ ऐसे वो एरिया के कुछ बंदों को ही लेकर करते हैं रिसर्च। कंडीशन बदल जाती है, क्लाइमेट बदल जाता है, तो पॉसिबिलिटीज भी बदल जाती है। Thank you very much, sir. Thank you, participant. Thank you, one and all.